Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Legal Matters, Qanuni Mashre. We're here to discuss legal issues regarding anything what you may feel you might have to discuss today. We'll be more than happy to take your calls. अगर आपके पास कोई questions there regarding immigration, litigation or representation, we're going to be here and discussing and giving you advice. I would like always my platform share with my colleague Shahid Mansoor. I'm going to welcome to the program. Shahid, welcome to the program. Yeah, good to be here, thank you. And let's go straight into the program, obviously because time got a problem with that. Now, people have been asking us about these spouse visas, 18,600. Apparently, this is at the moment the position from Home Office is still 18,600. हम अपने व्यूअर्स को ये बताते चलते हैं कि इस वक्त जो है ना 18,600 पाउंड जो है ना अभी भी वही है because अभी वो चल रहा है तो कोर्ट में maybe a review is going to happen. कोर्ट में चल रहा है, that's true, but we also would like to point out that the way the economic situation and the political situation of the countries is unlikely to go down by a significant margin anyway, if there is any change. You know, obviously we don't know which way is going to go. Is it going to be stay put as 18,600 or would it be reduced? We don't know. Obviously it's been appealed and it's with the Court of Appeal at the moment, and there is no decision so far. So it is looking, I mean, I don't want to, you know, hedge my bets, but it's looking that way that maybe there won't be any change whatsoever. So obviously the key things that जो families इस वक्त इस spouse visa पे apply करती हैं उनको इसी को maintain करना है इसी जो है 18,600 पे they have to maintain and try to meet that threshold. This is the important thing. A number of phone calls we've had last week and previous जितने भी हमारे program आते हैं and emails, it's people suggesting that they'll rather wait and फिर देखते हैं क्या होता है. I think that is the wrong strategy. There's been false rumors as well. People are getting, you know, misadvised, or they're just hearing wrong things either from friends or family, or that's already been reduced. Some people say a figure of 13,000, but it's not really the law. The law says that it's 18,600. I think the discussion was around being £13,000 or £13,800 as a minimum wage basic payable. Yeah, on the basis of a minimum wage. I think still, because we've not heard from the Home Office, so that's the figure it stands at the moment. Yeah. Yeah. Okay. What about obviously the first child will be the £3,800. A subsequent you will get a 2,400. Yeah. Now let's just talk about that. इसके बारे में आप क्या कहते हैं? Obviously people need. Well, again, it's the whole package, you know, in terms of meeting the financial requirements. So everything will be reviewed by the Court of Appeal now. It's not just the 18,600, but also the income threshold requirement for sponsoring the children. They'll be reviewed as well, you know, as part of the whole package. So if there is any changes there, then chances are there might be changes made to the sponsoring of the children as well on that basis. But again, it's looking pretty bleak at the moment. I don't think that the Court of Appeal judges would be making any significant changes. I think that generally speaking, what would people need to be made aware is that because we're into this political election period time and there's changes happening. I mean, European elections already, and the country's under immense pressures to curtail some of this. Let's just talk about it, so factor that in so that people understand the reason. As you quite correctly suggested and stated that we just had the European election, and obviously the parties which were anti-immigration have done significantly well. And obviously the government has to take notice of the expectations and the views of the public in general, and that's why it is unlikely that there's going to be any relaxation of immigration rules moving forward. Okay, we also mentioned, and previously we discussed people with a number of cases, people ringing us, and we've had about suggestion about the savings. Again, this is not straightforward. This is £16,000 they need to have in the savings of an amount. Now let's just talk about that. Yeah, I mean the thing is the formula for calculating how much of your savings goes toward meeting the 18,600 is quite complex and complicated. Obviously there are rules and procedures which needs to be followed, but it's not straightforward that you've got 16,000 and it can correlate like you don't need 16,000 from your income. So you need to have substantial
savings, and also you need to have the savings in your bank account for at least 6 months, and you also need to prove that the savings are your own savings, is not a gift or a loan from either from friends, family or parents. So that's quite important as well. I think that's a very important aspect, because third parties ki jo hoti hain, money cannot be taken into account. It has to be your own, and that is a very important point, because people get mixed up and say mere family member ne dal diye paise and they will help towards it, but that is the money you should be holding for substantial amount of time anyway, considerable time and also substantial amount of savings. So if you only got 5,000, 10,000, it might make a small contribution towards your overall financial requirement, but it won't be anything significant. So you know, when people talk about savings, you're looking substantial in terms of 20, 30,000 or above, you know, for it to have any sort of impact on the 18,600 figure. Okay, let's just go back. We mentioned about the political impact, and the reason for this being is the government has to curtail immigration and the migration aspect. But इसी वजह से आप देख रहे हैं things have gone difficult. अभी we'll discuss that. Let's एक कॉल आ रही है, शामिल करते हैं, फिर continue कर रहे हैं. Hello जी, welcome to the program. कौन कहाँ से? जी आप ऑन एयर हैं, अपना नाम बताएंगी प्लीज? जी मैं शुमाइला बात कर रही हूँ. ओके, आप बताएं अपना क्वेश्चन शुमाइला बहन. सर मेरे हस्बैंड का एच-1B वीजा है, जो पहले जिसमें 4 साल बाद इंडेफिनिट मिलता था, बगैर टैक्स वाला भी वीजा था. अब जनवरी में 2015 में इंडेफिनिट मिल जाएगा हम सबको इकट्ठा, मुझे भी और बच्चों को भी और मेरे हस्बैंड को भी. तो क्या नेशनलिटी मुझे 5 साल बाद मिलेगी, नए रूल लगेंगे या कोई पुराने रूल लगेंगे इस पे भी, नेशनलिटी पे भी? ओके ठीक है, आप तो नेशनलिटी के बारे में पूछ रहे हैं. अच्छा, आपको जो आपने किया था एप्लीकेशन, कब आपने डाला था ये? व्हेन यू पुट योर एप्लीकेशन? एप्लीकेशन जो थी वो 9 जुलाई के बाद ही डाली थी, और जब मेरी इंडेफिनिट होगा तो मुझे 2 साल हो जाएंगे यहाँ पे. अच्छा, तो मेरे हस्बैंड को 4 साल हो जाएंगे. आपके 2 साल हो जाएंगे, उनके हो जाएंगे 4 साल. ठीक है, नो प्रॉब्लम. आपकी ये ज़रूरी है पूछना. शुक्रिया बहन, आप प्रोग्राम वॉच करें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा. इसी प्रोग्राम में वॉच करते हैं. आई विल आंसर दैट क्वेश्चन. थैंक यू, वेलकम. I think we're going to be talking about some of these and the cut-off time. People need to be aware of that prior to date sheet. Sure. But before we go into that, उससे पहले डिस्कस करने पहले 2012 से जो चेंजेस बिफोर थी, जैसे अभी शुमाइला बहन की जो कॉल आए, and 2012 July 2012 is the new rules going to kick in. We'll just talk about that in the next period of the programming. But let's just carry on with what we're talking about, because अपने व्यूज़ को ये बताना चाहते हैं that इस वक्त जो 18,600, that's what the rules stands, and also the like you said, the savings not straightforward. No, तो एक और कॉल आ रही है, मैं शामिल करता हूँ, फिर आते हैं. हेलो जी, आप ऑन एयर हैं. आप वालेकुम सलाम, आप अपना नाम बताएंगी बहन? जी मैं रुबीना बात कर रही हूँ. जी, और अपना सवाल बताएं रुबीना बहन. हाँ जी, मुझे पता ये करना था कि मैंने अपनी एक आंटी को स्पॉन्सर किया था 1 साल पहले. ठीक है. तो वो उनका रिफ्यूज हो गया था. तो फिर रिफ्यूज के बाद उन्होंने वहाँ से पाकिस्तान से अपील का राइट मांगा. ठीक है. उनको मिल गया अपील का राइट. फिर उन्होंने अपील की. उनके हस्बैंड जो है वो ब्रिटिश हैं और वो पाकिस्तान में उनकी केयर करती हैं. ठीक है. तो अभी वो काफी बीमार हैं, तो मतलब अकेली हैं, उनके बच्चे भी इधर नहीं है, कोई पाकिस्तान में कुछ भी ना. तो उनके हस्बैंड की पाकिस्तान में दूसरी मैरिज है ये ना. ओके. तो अब जो है वो उन्होंने इस बेस पे किया कि मैं मतलब जो है वो फैमिली विजिट के लिए जाना चाहती हूँ, इनको भी साथ लेके. ठीक है. उनकी हेयरिंग आई हुई है. ठीक है. तो हेयरिंग का प्रोसेस नहीं पता कि यहाँ से मैंने स्पॉन्सर किया था, मुझे भी लेटर आया हुआ है, जबकि मुझे ये था कि मैंने उनको स्पॉन्सर किया तो रिफ्यूज हो गया. फिर उन्होंने वहाँ से अपील का राइट मांगा तो उनको मिल गया. तो अब उनकी हेयरिंग आई है. तो हेयरिंग के लिए कुछ आप बता सकते हैं कि क्या प्रोसेस होगा, मतलब क्या? ठीक है बहन, आपका क्वेश्चन आ गया. शुक्रिया आपके कॉल का. और इंशाल्लाह प्रोग्राम वॉच करें, हम आपको बता दें आपकी हेयरिंग की क्या होगी राइट्स, उसमें क्या प्रोसेस होगा. आई विल गो थ्रू दैट. एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं.
हेलो 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 जी, कौन कहाँ से? हेलो वालेकुम। आप अपनी टीवी की आवाज़ ज़रा बाइक कम कर देंगे सो आपकी भी आवाज़ क्लियर आएगी और हमें भी समझ आएगा आपका क्वेश्चन। जी जी, मैं डरबी से बात कर रहा हूँ। जी ठीक है, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम शहजाद है। ठीक है जी शहजाद भाई। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है। मैं 2010 में स्टूडेंट वीज़े पे आया था और मैंने जो है ना अभी यहाँ पे शादी की है। ठीक है। और मेरी मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड है, प्लस अभी मेरा एक बेटा भी है। अच्छा, एक बेटा भी है। तो करंटली आई स्टिल हैव गॉट माय स्टूडेंट वीज़ा टिल एंड ऑफ अक्टूबर 2015। ठीक है। और मैं अभी जो है ना वो इनकम थ्रेशोल्ड वाली रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहा, जिस वजह से मैंने अभी सेटलमेंट नहीं अप्लाई किया। ठीक है। तो मैं पूछना चाह रहा था कि कोई और रास्ता है जिसकी बेस पे मैं सेटलमेंट अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने देखा था फर्दर लीव टू रिमेन फैमिली पार्टनर और फैमिली पेरेंट 10 ईयर रूट। 10 ईयर रूट। आप 10 ईयर रूट के आप कह रहे हैं, आपको आए हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन 4.25 साल हो गए। 4.5 years। ठीक है, ओके शहजाद भाई, आपको बस इनकम थ्रेशोल्ड का पूछना है एंड आल्सो व्हाट ऑल द अल्टरनेटिव्स कहें। ये फर्दर लीव टू रिमेन फैमिली ठीक है। जो वो 10 इयर्स का रूट है करंटली, उसके मतलब भी अगर आप मुझे बता दें। 10 ईयर का भी बता देंगे हम आपको, डोंट वरी इंशाल्लाह। आपका क्वेश्चन आ गया हमारे पास। थैंक यू शहजाद फॉर योर कॉल। हम अपने व्यूज़र को बता दें, तो अगर आपके पास इस काइंड ऑफ सिचुएशन है आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं और वी कैन हेल्प यू फर्दर विद दैट वन। एक और कॉल आ रही है, इसे शामिल करते हैं। हेलो जी वालेकुम, कौन कहाँ से? जी मेरा नाम अली है, मैं इधर बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। जी वेलकम टू द प्रोग्राम। मैंने सुना था कि मेरे सेमेस्टर मैंने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया हुआ था। मेरे सेमेस्टर ने वो डॉक्यूमेंट्स होम ऑफिस को भेजे नहीं, उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे, तो ना ही उसने मुझे बोला कि डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं कोई। तो उसके बाद उन्होंने रिजेक्शन मेरी कर दी, और रिजेक्शन पे उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि वी गेव यू 1 month टाइम टू सबमिट दीज डॉक्यूमेंट्स। तो आपने जमा नहीं करवाए, फिर आपको 1 वीक का और टाइम दिया, फिर भी आपने सबमिट नहीं करवाया। लेकिन उसका मुझे कोई नॉलेज ही नहीं था किसी भी तरह से कि कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट भी किए गए हैं या नहीं। ठीक है। तो उसमें फिर उन्होंने मुझे अपील का राइट भी नहीं दिया था, लेकिन वो मैंने दोबारा उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अभी दोबारा डॉक्यूमेंट्स फिर मेरे से बोला कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हो फिर एक दफा। तो अगर सोलिसिटर इस तरह नेग्लिजेंट होता है तो उसके क्या मतलब हम कर सकते हैं उसके बारे में? बिल्कुल ठीक है अली साहब, आप इनकी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का अगर केसेस हो जाएं तो ऑब्वियसली इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डेट्रीमेंटल होता है आपके क्लाइंट्स के जो बंदे होते हैं। आई अंडरस्टैंड ना, कीप वॉचिंग प्रोग्राम, आपको जॉब देंगे। एक और कॉल आ रही है, इसे शामिल कर लेते हैं जल्दी से। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन कहाँ से? जी मैं इरफान बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी खान साहब, मेरी 2 क्वेश्चन थे वो मैंने पूछने थे। जी बोलें। वेलकम। एक तो ये कि मैं अपने भाई के लिए पूछना है, ठीक वो है। ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ की पाकिस्तान में ना, ठीक है। तो वो यहाँ पे आके LLM और LPC वगैरह कर लेते हैं, तो आफ्टर दैट उनको कोई वर्क परमिट वगैरह मिल सकता है यहाँ पे? ठीक है, ये क्वेश्चन था। ओके ये पहला क्वेश्चन है फॉर वर्क है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन? दूसरा ये कि वो LLM और LPC वगैरह करेंगे तो वर्क परमिट मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी कि यहाँ पे आके अगर वो डिग्री कंप्लीट करते हैं अपनी LLM या LPC, तो उसके बाद उनको क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी वर्क परमिट की? बिल्कुल ठीक है, आई अंडरस्टैंड। खान साहब थैंक यू फॉर क्वेश्चन, शुक्रिया आपका फॉर कॉल। हमारे पास क्वेश्चन आ गए एंड सारे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको इंशाल्लाह प्रोग्राम में जवाब देंगे। पर अभी थोड़ा सा हम डिस्कशन में ये लेके आ रहे थे जो अभी 18,600 की चल रही थी। एक और कॉल आगे से शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो जी वालेकुम, कौन कहाँ से? मैं हसन बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। हसन, वेलकम टू द प्रोग्राम। मुझे ये जानना है कि फर्दर लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन कौन सी है और इंडेफिनिट की कौन सी है, ये बता सकते हैं? बिल्कुल
further leave to remain की कौन सी है और indefinitely ठीक है thank you very much for your call हसन शुक्रिया ओके बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं आप हमें ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे जो ईमेल एड्रेस आ रहा होगा स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे उस पर आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करें बिकॉज कुछ टेलीफोन कॉल से इन्फॉर्मेशन फुल नहीं आती है तो आप ईमेल पे देंगे तो इंशाल्लाह हम आपको आज और इसी प्रोग्राम के बाद हम कोशिश करेंगे विद नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़ के अंदर ही आपको जवाब दें फ़ौरनी तौर पर जो आपको पता रखे और आए तो शायद एज वी टॉकिंग अभी प्रोग्राम में यही डिस्कस कर रहे थे obviously savings which will be उसके factors into that taking the equation होता है like I said it's a bit difficult so leaving that aside जो families हैं उनको पता होना चाहिए meeting the financial requirements जो दिए now that's very important. That's right, yeah. If you don't meet the financial requirement, your application will be rejected. That's right. So one of the key things that you got to meet the threshold, 18,600, or towards substantial near to it, and then the Home Office has discretion. अगर आपकी बाकी चीज़ें fit हो रही हैं, then they do have discretion. ये नहीं अगर 18,600 नहीं है, they'll automatically turn it up. But there is that discretion they have. Let's just talk about a couple of things in relating to that, because आप ये देखें अगर 18,600 है then you got to show your bank statements 6 months की bank statements लाजमी है दिखाना रखना and they have to be the correct with the income coming in matching the statements because if they don't अगर इस तरह नहीं होती है then people think चलो हमारे पैसे आ रहे एक statement में आ गए दूसरे में नहीं आ रही and it doesn't really matter because हमारे तो 18,600 at the end of it हमारे दिख रहा है figure but that's not the way Home Office works. That's correct, yeah. The Home Office is looking for consistency and credibility on part of the applicant. So if you say that you earn X amount of money, but your evidence is sketchy or it doesn't stack up, then obviously it will go against you in your application. So it is paramount importance that, you know, if you say you are telling the truth and the absolute truth, it's very important. If you just make up something, but then you haven't got the evidence, then Home Office will look in negatively on that. Yeah. शायद सब कॉल आ रही है शामिल करते फिर आते हैं carry on with the program. Hello. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम कौन कहाँ से? सर हसनैन बोल रहा हूँ. जी हसनैन साहब. डर्बी से. जी. सर मैंने 14 साल की बुनियाद पर केस किया था. ठीक है. 2012 में. अच्छा ठीक है. उसका फिर रिफ्यूजल आया फिर अपील के लिए भेजा लेकिन उन्होंने अपील के लिए भी अलाउ नहीं किया. तो उसमें आप मुझे ये बता सकते हैं कि अब मतलब है कि मेरे पास क्या चांसेस हैं या मैं जुडिशियल रिव्यू में अगर जाता हूँ तो वो केस में मतलब है कि कोई सॉलिड रीजन होने चाहिए किस बुनियाद पर मैं जाऊँगा जुडिशियल रिव्यू में. हुसैन भाई आपका क्वेश्चन हमारे पास आ गए. आप जो ये मेंशन कर रहे हैं जुडिशियल रिव्यू आपका रिफ्यूज हुआ था 14 यूरो ऑब्वियसली आपकी जुडिशियल रिव्यू रिफ्यूज नहीं हुआ सर. सॉरी अपील रिफ्यूज अपील में उन्होंने भेजे ही नहीं है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है या मगर आप ठीक है में भेजने के लिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ऑफ कोर्स हम आपको जवाब देंगे मगर आपको थोड़ा सा मैं बता दूं आपकी जो डिटेल्स है ना यू नीड टू कॉन्टैक्ट अस विद ईमेल जो एड्रेस हमारा है ना आप उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपने अपील में काउंसिल कागजात जमा कराए थे और इंशाल्लाह हम आपको प्रोग्राम में जवाब देंगे व्हाट यू नीड टू डू एनीवे. ठीक है ना. तो आप इस सवाल को समझें. हमने उसमें मतलब तस्वीरें वगैरह और ऐसी चीजें प्रूफ भेजे थे. वो ठीक है आपकी बात आप हमें ईमेल ज़रूर करें मगर आपको जवाब देंगे टीवी में आंसर योर क्वेश्चन एंड ये अपील के बारे में और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो भी हम आपको बता दें. सो थैंक यू फॉर कॉल. शुक्रिया आपका. I think what we need to be commenting and discussing about this obviously the imperative, the paramount 18,600 and obviously that people need to meet the financial requirements and that the bank statement must be 6 months. जो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स होती है जिसमें इनकम होती है वो टैली करना चाहिए months to months and that's important. Absolutely, yeah. Now उसके बगैर obviously then is inconsistency and they'll just deem it as and then also contradiction. So you're saying something but you're not backing it up, you know, in terms of the evidential documents. So but obviously there is one thing that we have talked about is again views को समझाने because it's people हमारा job होता है यहाँ बताने की legally तौर पे
that वो जो इनकम है, the statements है, these are very important, और उसकी किस तरह से वो अगर इन चीज़ों को करना चाहते हैं स्पॉन्सर, तो इन चीज़ों को उन्हें अपने इन चीज़ों को पहले सही कर ले. But let's just talk about the other requirements. You need to have adequate accommodation as well. We talked about that. That is important because if you don't have that and you have one or two other things, then again will be refused as an overcrowded. Let's just talk about that a little bit in that sense. Yeah, like you correctly suggested, there's a number of things the Home Office is looking for before they actually grant somebody leave to come over here to reside with yourself. Obviously there is the English language requirement. We've already talked about the financial requirement. One of the other key integral part of the overall process is that you got to show that you've got sufficient and suitable accommodation for your spouse. So if you're living in a house where it's already overcrowded, then obviously your application will be turned down on that criteria. So it's very important that before you submit your application, you have got sufficient and suitable accommodation for your spouse and for you to reside in. And also, for you to establish that that is the case, you need your local council to come and give you a written report to confirm that that is the case, or you can actually ask your local estate agent to give you some kind of in writing evidence to suggest that you have got suitable accommodation. Bilkul. And let's just this is the accommodation requirement. There's also there is the requirement for the English language test. But before we go to that, हम कॉल आ रही से शामिल कर दें. Hello. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? मैं जी असलम अर्ज कर रहा हूँ लंदन से. जी जी असलम साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम. मैंने अपनी स्पाउस वीजा अप्लाई किया था लास्ट जुलाई में. ठीक है. तो उसका अभी तक कोई आंसर नहीं आया, even though I was fulfilling all the criteria, all the the 18,600 plus ये जो अभी बात कर रहे थे कि accommodation का लेटर वगैरह ये वो सब कुछ था. मैंने I fulfilled all the criteria as I said before, but I haven't got any response. Whenever we check the actual status of the application, and they say अभी वो still under process है. तो तकरीबन काफी देर हो गई है, तो अब क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? ठीक है. जवाब ही नहीं दे रहे. क्या आपके whenever email it to them and they say that thank you very much, but is still under processing and we'll let you know. ठीक है. Now so a year ago did you say? Yeah, about 10 months now. About 10 months ago. ठीक है. Do you have a solicitor who's taking care of your case? Hello? लगता है कॉल ड्रॉप हो गई. कोई बात नहीं. इंशाल्लाह असलम भाई आपका सवाल आ गया हमारे पास और इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे. अभी ब्रेक की तरफ जाने वाले फ्यू मिनट्स में, ब्रेक के बाद जवाब आपको सबको मिलेंगे. Let's just talk about that. So obviously there is a requirement Shahid of the English language test. This is very important now. Yeah, especially since July last year. Yep. The requirement is whether you're applying for a spouse visa application or you're applying for ILR or if you're applying for nationality, you got to be able to speak English at acceptable standard, which is ESOL level 3 or European framework of level B1. Of course, and one of the key things that this obviously that came in last year. That's right. Those are the new rules, but also we've got now the Life in UK test. Yeah, additional to the one they have to be taken. Yes, yeah. I mean, Life in UK test itself has been revised as well. It actually looks for far in-depth and broad knowledge than it used to, and that is an essential requirement as well. That on top of not only passing the English language, you got to pass the Life in UK test, which obviously tests your knowledge of things in relation to the UK. Sure. And let's just make sure that people fully understand some of the things. So the requirement is still the 18,600. They have to have the 6 months bank statements. Now, also, one of the key things जो हमने बात कर रहे थे, that if somebody's self-employed, not into a job working, but his income is less, then he has to show a letter from this accountant, verified, certified accountancy. Certified chartered accountant. Yeah. That's right. Yes. So
again, you could be in a full-time job, but you can have, say, another job, a second job you can hold. That's not a problem. But again, you need to get a letter from an accountant to say that your first job you are doing, you get X amount of money, and then the second job is then verified. इसमें कोई मसला नहीं. Now let's just talk about exemptions, Jodi. Again, there are exemptions to the rules, and those are the people who don't need to meet the financial requirements. It's got your disability job or the disability living allowance. Certain people on certain benefits are exempt from meeting the financial requirement, and to name one is obviously somebody who's on disability living allowance. Those people are not expected to meet the financial requirement. And furthermore, those people on attendance allowance as well. Yeah, carers are also exempt. Attendance and carers allowance in those categories go be इसमें अगर कोई होता है, and let's not just forget, importantly, if anybody's of the age of 65. 65 obviously. And they're exempt automatically on that basis of their pension. As a pension. So again, अब हमारे ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, and अपने व्यूज़ को बता दें, आपके जो क्वेश्चंस है बहुत सारे आ रहे हैं, ईमेल्स भी आ रही हैं, और इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे. अभी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन अबाउट दिस स्पाउस वीज़ास एंड रिक्वायरमेंट्स, और जो एंटरप्रेन्योरल का वीज़ा उसके भी डिस्कस करते हैं. सो अभी आते हैं ब्रेक के बाद. सो बैक इन फ्यू मिनट्स.